So for example, uh, let's say I'm here right now, pwd. This is my root, and I think I have GCC here. Yes, I have GCC. So I'm writing a code called ashutosh.c, and क्या होता है यहाँ पे, has include stdio.h, right, and then void main. पता नहीं कितने टाइम बाद सी लैंग्वेज पे आया, बट नो वरीज. Then curly braces open close, I hope the right syntax, and printf. Let's say I'm going to hello, I am the one you need to start with, right? Printf again, none other than clang. Okay, in short, and I'm giving a new line as well. Fine. So this is my code. Okay, I need to compile it if everything is fine. So compile ho gaya. Okay, I missed semicolon here. That's why I hate this language. Okay, and yes, badhai ho. Then what you get a file called a.out. If you want to run this C language code, then a.out. Fine, this one. So after compilation of this code, that is hello.c, ashutosh.c, we got a compile output. तो compilation of the, मतलब इस फाइल को अगर आप खोल के देखें तो इसका कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट स्टोर हुआ वो इस पे स्टोर हुआ. And what is the compiled form? That is this. Oh, a very weird data, but इसी कंपाइल फॉर्म को कौन चलाएगा, ये. ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूं, इस बार थोड़ा समझ लेना. When I say a command in Linux, so command refers to a file name, and that file name will be executed by your shell. In our case it's a bash. ये file name कौन execute करेगा? Shell. What the hell? This file name will be executed by bash or shell, any shell. Then when you execute that file, this file may contain a path of compiled, a path of compiled code or normal code or a script, anything. If the code is designed in C or Java language, it will be the path of this. So for example, मैंने अभी क्या किया था, let me just make it clear. Let's say मैंने directory बनाई OK, alright. I copied ashu.c and a.out both in OK directory, और मैं OK पे जाता हूँ. तो यहाँ पे क्या है, दो कोड, एक मेरा ओरिजिनल कोड, दूसरा कंपाइल पार्ट ऑफ दिस सी. इसको मैंने कंपाइल करके ये बनाया है, राइट, यानी जो जीसीसी ने बनाया. इफ यू वांट टू मेक दिस एज अ कमांड, व्हाट यू कैन डू, लेट्स से usr bin, मैंने नाम दे दिया माई कमांड और माई cmd. ठीक है, माई कमांड. What I need to do here, I need to call the default shell /bin bash. Then I need to give the path of
the compiled file. So this is compiled part of C language. ठीक है, इसी कोड को अब ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव दिस लाइक JSR bin my command. ठीक है, देखना, if I hit my command hello, I'm the one you need to start with, none other than C language. Alright, so ऐसे करके जितनी भी कमांड्स हैं सबके कोड लिखे गए हैं और सब शेल ही कॉल करती है. राइट, सो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि कमांड बनाना बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करके उसको कंपाइल करो, या फिर अगर कंपाइल होने वाली लैंग्वेज नहीं है तो उसका पूरा पाथ एक शेल की फाइल को दे दो, तो शेल चलाएगी उस कमांड को. राइट, एनीवे, so if you are understanding it, then say yes. Yes, विक्रम ने सही जवाब दिया है. आशिफ, कंपाइलर कोड को कंपाइल करके एक नई फाइल में स्टोर करता है, जबकि इंटरप्रेटर उसी फाइल को रन करता है लाइन बाय लाइन. दैट्स द रीजन, दैट्स इट. And Harshvardhan, by default, a.output is already having execution permission when you compile it. Okay, so when you compile it, your a.out is already having execution permission. So compiler's job is to give Piyush, you can write it, but you need to change in a C language module. ठीक है, मतलब पीयूष ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आप C लैंग्वेज के कोड को लेट्स से hello.c नहीं लिखोगे तो आपका कंपाइलर इसे चेक नहीं करेगा. ओके, so the best answer I can give it to you is, जब भी आप C लैंग्वेज के कंपाइलर को हैश exclude stdio.h से चेक करते हैं तो everything is present in your system, right? every single thing is present in your system. तो आपके कंपाइलर को ये बात समझानी पड़ेगी. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना है कि where is stdio.h, let me tell you, तो जो आप स्टैंडर्ड io.h लिखते हैं that is present somewhere in your system. ठीक है, आई होप इसका नाम चेंज ना हुआ हो. तो यस, ओके, आपको फिर से मैं एक बात बता दूं, whenever you write kind of hash include then stdio.h, ठीक है, इन C लैंग्वेज. पता है ये क्या होता है, लोग हेडर पर बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं, ये एक फाइल है. इस फाइल यानी C लैंग्वेज में एक फाइल को कॉल करने का तरीका ये है. दैट मीन्स अगर आपने खुद ने एक कोड लिखा है हेडर फाइल के फॉर्म में, यू कैन ऑल्सो यूज लेट्स से हैश इंक्लूड header file name.h, right? So this is a file and where it is present here. See, if I open it for you, sorry, so if I just open it for you, when this is a header file. Here couple of things are defined. इसमें बहुत कुछ लिखा है कि क्या, कैसे, कहाँ, और ये बहुत बड़ी फाइल है. तो हेडर, जितने भी हेडर आप कॉल करते हो इस लैंग्वेज में, सारी के सारी एक फाइल है जो USR इंक्लूड के अंदर लिखी होती है.
एंड इफ़ यू गो टू देयर अंडर यूएसआर इंक्लूड, मतलब पता नहीं मैं किस टॉपिक पे जा रहा हूँ, ये सारी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल्स हैं, ऑल राइट। एनीवे, ये जैसा भी है, आपने जैसे भी सी पढ़ी होगी आई डोंट नो, बट जो रियलिटी है वो कुछ ऐसी ही है। Okay, so another question, and I also want to define the interpreter inside a file itself, like Python. No, in case of compilation, compilation cannot be defined. क्योंकि compilation को एक बार में एक बार में चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले कंपाइलर खुद चेक हो फिर बाद में सब कुछ चेक करे. Okay, so I hope you are understanding. Okay, anyway, तो ये कुछ बातें थी. आई होप ये भी समझ में आया होगा कि ये एक फाइल होती है जो आपके सिस्टम में पड़ी है, उसे आप यहाँ से इंक्लूड करते हैं. राइट, ओके, ऑल गुड आई बिलीव. तो सब कुछ सही है. जस्ट गो बैक टू आवर व्हाट आई से शेल स्क्रिप्टिंग अगेन. ठीक है, तो हम शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर चलते हैं. Right, so I'm going to just go here in this location. Alright, okay, so July 5, 2020. Okay, now I'm going to give you some new method of inputs. Okay, so advanced underscore method dot sh. ठीक है, advanced method underscore input. So if you have seen what methods we are using to take input, we are seeing like one echo, and we are writing some message like type something, then read and variable. This is method number one. Okay, so we use method one. Likewise, another method I described, that is two. I can use read hyphen p for paragraph, and why don't you type something. Okay, and you can store in a variable called b. Okay. Semicolon का कोई importance नहीं है, I'm just putting it as a practice, and then I'm just printing it back like okay. Cool, you made it. $B. Okay, and $A both. Fine. तो हमने ये दो मेथड इनपुट के देखे थे. Okay, I hope you remember the same. If I'm gonna use bash and 900,000. Cool, you made it, right? So I hope ये बिल्कुल याद होगा कि हमने ये दो मेथड देखे थे. ठीक है. Now again the same fact. Now what I am saying is, जब भी आप किसी लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, राइट, इनपुट को किसी भी लैंग्वेज में देते हैं, तो इनपुट हमेशा दो टाइप से आता है. सेकेंड का नाम पर लिखता हूँ, इसे बोलते हैं इनलाइन इनपुट. इनलाइन इनपुट
दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं, अगर कोई बता पाए तो? जो अभी हम रन कर रहे हैं, ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछता है लाइक दिस, यानी कि हमसे इनपुट कम पूछता है जब आप कोड को चला देते हो तब। इसे कुछ बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो बता पाए, मतलब जनरली कम लोगों को पता होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जब कोड, यानी कि आफ्टर कोड execution we will be asked for inputs, like in our case it's happening. Anybody input from channel? No, no, no. कोई भी, वैसे नो भी बोल सकते हो कि आपको नहीं पता, बिकॉज हाउ डू आई नो कि यहाँ पे हम राइट रन टाइम? नो नो, इट्स नॉट दैट। मतलब एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, आर्गुमेंट इनपुट फ्रॉम न न न रन टाइम इनपुट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो आगे बढ़ जाते हैं।